Assalamu alaikum. This is our demo video for group number 10 regarding our AIS CCP. So, in our contributors, we have Sheriff Jack 1, which is me, Kumal Raza Walji, CT078. We have Muhammad Mudassir Anis, who is 073, Ahsan Ali, who is 080, and Farman Ali, who is 079 as our roll numbers. So, our project today is about an intelligent monster AI that we have made for a 2D maze game, which consists of the main core mechanics where a player has to navigate and find the exit of a maze, like somehow reach it. But alongside that, a monster is dynamically pursuing the player, and the player also has to survive the monster. He has to evade the monster and somehow escape. This game consists of a sort of a time attack scoring algorithm where the longer the player survives, the higher his score or the higher his success. He's in a race against time. He has to quickly get out of the maze as quick as possible. The technologies that we have used for our game consists of Python as our main programming language, the Pygame library, which is used for making games in Python in general, and a BFS pathfinding algorithm, breadth first search, which is used for our monster AI to try and find the closest path to the player as its objective, because it has to catch the player. The specific innovation that we have applied is that we have an adaptive form of monster difficulty rate, which is adjusted using a finite state machine, a similar model such as a finite state machine. And so now I would like to call Farman to explain the maze generation and how it works. So, yes, मेरा नाम फरमान अली। अच्छा, मैं यहाँ पे ना हमारा जो मेन है ना मेज जनरेशन सही है। इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ आवर प्रोजेक्ट। सो बिहाइंड द लॉजिक हाउ दिस मेज इज जनरेटेड, सो वो मैं आपको बता रहा हूँ। सही, तो मेज जो हमारी है ना हमारी जनरेट हो रही है प्रिम्स एल्गोरिथम के ज़रिए। जो प्रिम्स एल्गोरिथम है इट इज़ यूज्ड टू जनरेट द मेज। सही है, बट इसमें एक डिफ़िकल्टी थी कि प्रिम्स एल्गोरिथम ऑलवेज generate a maze of only single solution, like a single path. There is a just single path. So there was a difficulty like uh, our player cannot escape from the monster, and monster is also coming from that path, and our player is going to also following that path. So there was 100% possibility that the player can be caught by the monster. Okay, then I thought लाइक वही थॉट कि हम जो है ना इसमें यानी मल्टीपल पाथ का जो है ना वो कैसे डालें, यानी मतलब एक पाथ से ना यानी डिफरेंट पाथ बन जाएं। मतलब एक जगह पे मॉन्स्टर आ रहा है सही है, और उसी जगह पे ना उसके सामने हमारा प्लेयर है सही है। तो प्लेयर को जो है ना मतलब एक कोई एस्केप मिल जाए मॉन्स्टर से बचने के लिए, तो हमने उसमें जो है ना मल्टीपल पाथ्स ऐड कर दिए सही है। सो हमारा जो बेसिकली मेन जो वो मेज़ जनरेट हो रहा है वो हो रहा है प्रेम्स एल्गोरिथम के ज़रिए, और सेकंडली उसमें जो मल्टीपल पाथ्स हम ऐड कर रहे हैं वो हो रहा है हमारा एक मतलब ऐड मल्टीपल पाथ फंक्शन के ज़रिए, जिसमें हम जो है ना रैंडम वॉल्स चूज़ कर रहे हैं और उसको जो है ना हम ब्रेक कर रहे हैं टू मेक द पाथ। सो या दैट इज़ ऑल अबाउट द जनरेशन ऑफ द मेज़। अच्छा एहसन, अभी तुम्हारी बारी है। प्लेयर के मूवमेंट बताओगे, यानी प्लेयर जो है वो कैसे मूव कर रहा है हमारे गेम में। So yeah, this is roll number 80 SNLE. So I'm going to explain how the movements of a player are going, and how this is like how we have implemented the movement of player and the monster. So we have used a library here with, to make the grids and the you can say. हाँ एहसन सही। अच्छा, पाई गेम लाइब्रेरी सही है। उसके बेसिस पे ना हम क्या करते हैं कि प्लेयर के ना यानी कीबोर्ड जब वो प्रेस कर रहा है ना सही है, कौन सी की प्रेस कर रहा है वो हम जो है ना वो ट्रैक कर रहे हैं सही है। फिर उसमें हम जो है ना वो कर रहे हैं कि यानी प्लेयर जो है ना कैसे मूव करेगा आगे सही है, यानी एक जगह पे खड़ा हुआ है तो वो राइट कैसे जाएगा, लेफ्ट कैसे जाएगा, अप कैसे जाएगा, डाउन वाले सेल की तरफ कैसे जाएगा सही है।
तो वो हम ट्रैक कर रहे हैं कीबोर्ड के अप डाउन। फरमान ये हम ये कट कर देंगे पार्ट जहाँ हम रुक रहे हैं ना, वो कट कर देंगे वीडियो एडिट में। ओके ठीक ओके। है, सो मैं एक अच्छा मिनट। सही है, ऐसा तुम ऐसे बताओ बस, पाई गेम लाइब्रेरी के जरिए ना हम ये कर रहे हैं कि उनकी ना कीबोर्ड से ना उसकी जो अप डाउन लेफ्ट राइट कीज है ना वो हम सिर्फ ट्रैक कर रहे हैं, सही है। और उसके बेसिस पे ना प्लेयर मूव कर रहा है, अगर वो लेफ्ट एरो दबा रहा है तो चलो लेफ्ट जा ठीक है रहा ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। है। हाँ रहमान, ऐसा स्टार्टिंग से दोबारा बताओ, सही है। ओके, मैं वन करता सो हूँ। सो दिस इज अच्छा रोल एक नंबर 80। सेकंड, सबको दिख रहा है ना मेरे मैसेजेस? मैं सबको बता रहा हूँ कि थोड़ा जोर से बोलो वगैरह। भाई वो रिकॉर्डिंग में भी जा रहा होगा। वो मैं कट कर दूंगा, उसको साइड से एडिट ठीक कर है, लूंगा, सही है, सही है। ठीक है, चलो। लेकिन अच्छा उसको यार एक सेकंड मुदस्सिर, सही है जब तक ऐसा। अच्छा ठीक है, जल्दी खत्म कर लो यार, जल्दी खत्म कर लो इसको। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। So this is roll number 80 and I am going to tell you about the movements we have implemented for the monster and the player. So basically we have used the Pygame library here to control the movements and track the movement of the player and monster too. So what we are doing here is we are getting the input from the keyboard, and the Pygame library tells the program that how where where the player should go. Like if we are pressing the up key, arrow up key on the keyboard, then the player will go up, and like this we will implement like any other game, जैसे कि हम दूसरी गेम्स में करते हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट। तो इसी तरह इस गेम में भी ये ग्रिड्स में मूवमेंट होगी। सो per click we have implemented one move. Like if we are moving arrow up, so it will only cover the one grid, like in our game we will show in the end. And now I'm going to tell you about the player moves in a tile based fashion using a keyboard input. Each movement checks the maze wall to ensure valid direction. And for the monster movement is automatically and governed by an AI update loop that calculates its path towards the player current location. And now I will call Mudassir to further explain the project and remaining stuff. Assalamualaikum, this is Mohammed Mudassir, CT22073. So I am going to explain the whole logic behind how our AI agent is tracing the player. So we are using breadth first search for that to trace the player. Basically, we have four main states. The first state is the idle state, the second state is the alert state, the third one is the chase, and the last one is the frenzy. So the logic is that that our AI agent will always try to minimize the distance between him and the player. And we have set the criteria on that. Like if a player is on idle state, it means it is 20 cells far from the AI agent. And if the play and in the idle state, the AI agent will move randomly to chase the player. He go up, down, left, right. Basically, he will explore all the states to reach to the player. And the next state is the alert state. In alert, a player is an AI agent is in alert state when he is 10 cells away from the player. And similarly, if a player is in chase state, so it means he is less than 5 steps away from the AI agent. And in the last, we have frenzy state. In frenzy state, a player, an AI agent can easily or attack the player or kill it. So these are the logics that we have implemented to chase the player and to kill him basically. So that's all the logic for how the AI agent is going to chase the player and how it he is going to kill the player. So that's all from my side. Now I am inviting Farman to explain some logic behind our code and behind our implementation.